First optoelectronic device is photodiode. Very important. तीनों का तीनों important है. Photodiode. Let's see this. First is photodiode. The name itself suggests that photo means what? Light. When light falls on the diode, what will happen? Generation of electron hole pairs occur. Therefore, conductivity increases. And this is what? Reverse bias. This diode is always reverse bias. So what is the diagram here? You see, this is what PN junction diode. This is what PN junction diode. PN junction diode. And this is what the junction here. This is the depletion layer. This is what the depletion layer. This is what P side. This is what N side. And the diode is always reverse bias. Remember this. The diode is always reverse bias. P को negative, N को positive connect किया गया है. And this is what output. This is what output is taken through the load resistance. And this diode is always reverse biased. When light of suitable frequency falls on this one, light of suitable frequency falls on this one, h nu. So how much should be the value of h nu? How much should be the value of h nu? H nu must be h nu must be greater than what? Barrier potential Eg. Always. If h nu is greater than barrier potential, then what will happen? Our energy gap, this energy gap, barrier potential or energy gap, what will happen? The electron hole pairs generates at the junction. At the junction, what will happen? Breaking of covalent bond occurs. At the junction, breaking of covalent bond occurs. You see, breaking of covalent bond occurs. After breaking covalent bond, electron hole pairs generates. So electrons travel towards n side, electrons travel towards n side, and holes travel towards, अभी electron चला गया तो एक hole create होगा, that hole travels towards p side. Therefore, electron concentration increases in n side and hole concentration increases in what? P side. Do you understand this or not? Hole concentration increases in p side and electrons concentration increases in n side. Now what will happen? As the diode is reverse biased, you see, the diode is reverse biased. Therefore, all the holes they're in the n side moves towards p side, and finally they get collected at negative potential of what this cell, and the electron gets collected the positive potential of the cell. Therefore, in output you are going to get the current. You're in output you're going to get the current. Understand this? So when H nu is greater than Eg, the covalent bonds start to break. Therefore, electron hole pair generates, and holes travel towards p side and electrons travel towards n side. So concentration of hole increases in p and concentration of electron increases in n. And finally, as the diode is reverse biased, so all the majority charge carriers are moving towards their respective electrodes. Therefore, in output, you are going to get the current. Output में current मिलेगा RL. समझ में आया? हेलो? अरे समझ में आया सब? अरे सब समझ में आया? हेलो? समझ में आया ना? लिखो डायग्राम ड्रॉ करो. Draw the diagram. This much diagram, draw this. Draw the diagram. So this is what PN junction diode. PN junction diode. Understand this? फिर से okay, draw the diagram, I'll make you understand. Draw the diagram. Draw the diagram, I'll make you understand. Again, look here. When light of suitable frequency falls exactly at the junction of PN, this is the junction of PN, then electron hole pairs generates. Electron hole pairs generate. What is the amount of frequency falls? H nu must be greater than Eg. इसमें जो एनर्जी गैप है उससे ज़्यादा एनर्जी उसमें लाइट से आना चाहिए. अगर लेस हो गया, H nu is less than Eg, then no what? Bonding breaks there. No bond breaks there. Therefore, when H nu is greater than Eg falls at the junction, due to breaking of covalent bonds are breaking, so many covalent bonds are there. Due to breaking of covalent bond, electrons are generated. Now you see, due to the barrier electric field, the electrons are moving towards n side and holes are moving towards
p side due to barrier electric fields. That means here what the concentration of electron increases in n side. n side में पहले से इलेक्ट्रॉन है मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, अभी फिर इलेक्ट्रॉन चला चला जा रहा है, तो द concentration of electron increases here and the concentration of hole increases in p side. Clear? And this photodiode always works in reverse bias condition. Why? A question कितना है why? Why photodiode always works on a reverse bias condition? Because the concentration of hole and concentration of electron or majority charge concentration increases in p and n crystal. In order to drag all those majority charge carriers, these what photodiode, this photodiode is always reverse biased. देखो ये अगर नेगेटिव हुआ इसमें पॉजिटिव हुआ, तो ऑल पॉजिटिव चार्ज गेट्स कलेक्टेड एट द नेगेटिव, ऑल दिस पॉजिटिव चार्ज क्या है गेट कलेक्टेड द नेगेटिव potential of this cell, and all those negative charge gets collected the positive potential of cell. Therefore in output you are going to get the current. समझ में आ रहा है? अरे समझ में है सभी को? हेलो, समझ में है सभी को? या डाउट है किसी का? लिखेंगे नोट, राइट ऑन द नोट. डाउट नहीं है? लिखो, नोट लिखो. Photodiode is always reverse biased. Write down. Photodiode is always reverse biased. Photodiode is always reverse biased when a photon of energy h nu, when a photon of energy h nu greater than Eg means energy gap. When a photons of energy h nu greater than Eg, energy gap of semiconductor falls on the diode, additional electron hole pairs are generated. Additional electron hole pairs are generated due to the absorption of photons. Due to the absorption of photons. Absorption of photons. These charges are developed near the depletion region. These charges are developed near the depletion region. Near the depletion region. Near the depletion region due to the junction field. Due to the junction field. Due to the junction field, electrons get collected on n side. Electrons get collected on n side and holes on the p side. And holes on the p side. P side, setting an EMF. Setting an EMF. Setting an EMF. As the diode is reverse biased, therefore current flows through the load resistance R. Current flows through the load resistance R. Load resistance R, hence output is obtained. Load resistance R, hence output is obtained.
hence output is obtained. Understand this? Now vi characteristics of this what photodiode, write down vi characteristics. Vi characteristics of photodiode. vi characteristics vi characteristics of photodiode क्या है देखो. vi characteristics of photodiode, write down. मतलब ग्राफ है, बताया था प्रैक्टिकल ग्राफ है vi characteristics. This is what practical graph vi characteristics plus v minus v. Always have to write I in milliampere, ये सब लिखना है. मिली एम्पियर आई इन माइक्रो एम्पियर, नहीं तो मार्क नहीं मिलेगा. चारों को लिखना है व्हाट सेमीकंडक्टर कैरेक्टरिस्टिक में प्लस बी माइनस बी आई इन मिली एम्पियर आई इन माइक्रो एम्पियर. किसी एक को छोड़ोगे तो हाफ मार्क कटेगा. हुआ. अभी वेरियस इंटेंसिटी लेके मुझे ड्रॉ करना है. वेरियस इंटेंसिटी लेना है. पहले लो इंटेंसिटी लेना है. इंटेंसिटी I1 तो ग्राफ विल बी लाइक दिस. ये इंटेंसिटी I1 के लिए इंटेंसिटी ऑफ लाइट. फिर I2 थोड़ा बढ़ाया, ग्राफ विल बी लाइक दिस. दिस इज व्हाट I2 इंटेंसिटी. फिर बढ़ाया इंटेंसिटी, सब ओरिजिन से आएगा. सब ओरिजिन से आएगा. I3 सब ओरिजिन से ही आएगा. ओरिजिन से सब आएगा. I4. This is what I3. This is what I4. Now here you have to write I4 is greater than I3 is greater than I2 is greater than I1. जैसे से इंटेंसिटी बढ़ाओगे the strength of the current also increases. This is VI characteristics of photodiode. Write down. This is the VI characteristics of photodiode. On increasing what? On increasing intensity, the current increases. Draw karo. Now write down uses of photodiodes. Uses. The photodiodes are used for following purpose. Photodiodes are used for the following purpose. Number one, light operated switch. Okay, no problem. Asutosh, okay, I'll send that. Write down. First is photodiodes are used for the following purpose. Number one, light operated switches. First is light operated switches. Number two, speed reading of computer what punch cards. अरे कंप्यूटर पंच कार्ड में भी फोटोडायोड भी यूज हो रहा है. स्पीड रीडिंग ऑफ कंप्यूटर पंच कार्ड PUNCHED पंच कार्ड्स. इलेक्ट्रॉनिक काउंटर्स में यूज किया जाता है. इलेक्ट्रॉनिक काउंटर्स. नेक्स्ट इज ऑप्टिकल सिग्नल्स. Optical signals. Clear? Optical signals. This is all about your photodiode. Next, write down light emitting diode. What is that? Let's see this. Light emitting diode. What is that? This is just reverse of what? Reverse of photodiode. रिवर्स ऑफ फोटोडायोड. फोटोडायोड में क्या था? लाइट गिरा तो कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक हुआ, रिलीजेस फ्री इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स आर जनरेटेड हियर. बट हियर व्हाट? द combination of electron and hole pairs takes place. Combination takes place and there is evolution of energy, radiation of energy. Combination takes place. By compulsion, we have to combine this electron and hole pairs. Electron of p region and whole region of n. Electron of whole region of p and electron region of n. By compulsion, you have to combine this at the what? Junction. When at the junction they are combining together, there is a release of energy. And this energy, this radiation, what is associated with different color. अगर कंपाउंड सेमीकंडक्टर लेते हैं तो डिफरेंट कलर में मिलेगा. दैट इज नोन एज एलईडी, लाइट एमिटिंग डायोड. अंडरस्टैंड दिस. वो लाइट एमिट करेगा अभी. क्लियर? तो लिखो एलईडी और लाइट एमिटिंग डायोड्स. व्हाट इज दैट? एलईडी. राइट डाउन.
इट इज ए हेवीली डोप्ड, हेवीली डोप्ड करना जरूरी है, क्यों? हम होल इलेक्ट्रॉन पेयर्स जनरेट करना है, कैसे जनरेट करेगा? हेवीली डोप करोगे, अंडरस्टैंड, दोनों साइड हेवीली डोप करोगे, राइट डाउन, लिखो इट इज ए हेवीली डोप्ड semiconductor, heavily doped semiconductor which spontaneously converts, which spontaneously converts the biasing electrical energy into optical energy, spontaneously converts the biasing electrical energy into optical energy, and is always forward biased, and is always forward biased, it is always forward biased. And simply same semiconductor I am taking, अरे जो डायोड लिए थे वो सेम डायोड लिए थे बट हेवीली डोप्ड है, ये डायोड क्या है? हेवीली डोप्ड है, एंड इसमें से क्या रिलीज होगा? इसमें से एनर्जी रिलीज होगा ऑलवेज, द एनर्जी इज रिलीज फ्रॉम हियर, दिस इज व्हाट? फोटो डायोड, द एनर्जी इज रिलीज फ्रॉम दिस, जंक्शन से निकल रहा है, जंक्शन से निकल रहा है, तो व्हाट? एनर्जी इज रिलीज, therefore this is known as photodiode, this is known as photodiode, energy is released, h nu, h nu amount of energy is released, this is the photodiode, clear? Sorry, light emitting diode, sorry, light emitting diode, energy is always released, diagram draw karo, draw the diagram, and it is always forward biased, it is always forward biased, लिखो इसके ऊपर नोट लिखो, write down, write on the note, लिखो this diode is heavily doped, heavily doped, heavily doped, as it is forward biased, as it is forward biased, as it is forward biased, forward bias होने से क्या होगा बोलो? अरे कॉमन सेंस, फॉरवर्ड बायस होने से क्या होगा? ये P, ये N है, ये जंक्शन है, P पॉजिटिव N नेगेटिव, तो फॉरवर्ड बायस होने से क्या होगा? मेजॉरिटी चार्ज कैरियर कहाँ जाएंगे? मेजॉरिटी चार्ज कैरियर P को जाएंगे, अरे यहीं पे N साइड में इलेक्ट्रॉन इज अ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, किधर जाएगा वो? P में जाएगा, होल्स किधर जाएगा? N में जाएगा, अरे होल्स N में जाएगा, अंडरस्टैंड दिस, अरे मेरा इलेक्ट्रॉन माइनॉरिटी चार्ज था व्हाट? P में, अभी ये इलेक्ट्रॉन आ रहा है N से P, मतलब मेजॉरिटी चार्ज कैरियर विल कन्वर्ट इनटू माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, यहीं पे जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर था जब P में आएंगे दैट विल बिहेव लाइक माइनॉरिटी चार्ज कैरियर इन P, एंड होल में जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर था वो ड्यू टू फॉरवर्ड बायसिंग जब N में जाएंगे वो होल माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की तरह बिहेव करेगा, अंडरस्टैंड दिस, अरे समझ में आया? therefore concentration of minority charge increases where? Near the junction, near the junction concentration of minority charge increases, concentration of minority charge increases, understand this, therefore what will happen? Due to excess minority charge carriers at the junction, what will happen? They combine together here at the junction, plus will combine with minus, the whole will combine with electron, and by the combination you are going to get the photo energy, फोटो एनर्जी, यहीं पे जो एनर्जी रिलीज होगा यहीं पे भी एच न्यू, अंडरस्टैंड दिस, यहीं पे जो एच न्यू है नियरली इक्वल टू ई जी होगा, वो स्लाइटली ग्रेटर होगा, अंडरस्टैंड दिस और नॉट? इक्वल टू और स्लाइटली लेस देन द बैंड गैप, स्लाइटली लेस इक्वल होगा या स्लाइटली लेस देन द बैंड गैप होगा, अंडरस्टैंड दिस, उल्टा है इसी का, लिखो, लिखो, तो क्या लिखा है? अरे क्या लिखा है? व्हाट हैव रिटन?
Due to forward bias, write down. Due to forward bias, electrons are sent from N region to P region. Electrons are sent from N region to P region, while while holes are sent from P region to N region. P region to N region, where where all the mobile charges are minority carriers, where all the mobile charges are the minority charge carriers. Minority charge carriers. Near the junction, the concentration of minority carrier increases as compared to the equilibrium concentration. As compared to the equilibrium concentration. Equilibrium concentration. Write down. On either side of the सर थोड़ा फिर से बोलेंगे तो माइनॉरिटी चार्जेस what पूरा पढ़ो. सर नियर द जंक्शन वो वाला Near पॉइंट the junction, the concentration of minority carriers increases as compared to the as compared to the as compared to the equilibrium concentration. As compared to the equilibrium concentration. Write down. On either side of the junction, on either side of the junction, on either side of the junction, the excess minority carriers, the excess minority carriers, the excess minority carriers combined with the majority carriers, combined with the majority carriers on recombination, the energy is released in the form of photons. On recombination, the energy is released in the form of photons. Photons. The energy of photons is either equal or slightly less than the band gap. The energy of this photon, either equal or slightly less than the energy gap. Slightly less than the band gap or energy gap. Now note में लिखो, very important note, write down. When number one note, first note write down in note. Light emitting and note में ही 1 mark question छुपा है, बहुत important note है ये, very important note, write down. When the forward bias of the diode is small, when the forward bias of the diode is small, the intensity of light emitted is small. The intensity of the light emitted is small.
Number 2, on increasing the forward current. Number 2, on increasing the forward current, the intensity of light increases and reaches a maximum value. The intensity increases and reaches a maximum value. Third, on further increasing forward current, the intensity of light decreases. On further increasing the current, forward current, on increasing the on further increasing the forward current, the intensity decreases. तो क्या इससे पता चलता है? अरे लो फॉरवर्ड बायस के लिए लो करंट है, जैसे जैसे करंट बढ़ाओगे इंटेंसिटी भी बढ़ता जाएगा, बट मैक्सिमम तक बढ़ेगा, उससे आगे नहीं बढ़ पाएगा. मैक्सिमम ही बढ़ेगा, उससे आगे और नहीं बढ़ पाएगा इंटेंसिटी. फिर गोज ऑन डिक्रीजिंग. क्लियर? अंडरस्टैंड दिस? Therefore, LEDs are biased such that light emitting efficiency is maximum. Clear? Next, IV characteristics or VI characteristic. Write down. IV characteristics or VI characteristic. लिखो. IV और VI जो भी लिख सकते हो. लिखो VI characteristics और IV characteristics. IV characteristics of what? Diode. क्या है? IV characteristics क्या आएगा? देखो. What is that IV or VI? IV characteristics. Always have to take potential as abscissor and current as ordinate. ये forward bias है, इसलिए इधर ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है. I in milliampere लिखना है. Understand this? And that is always forward bias characteristic. मतलब ऐसे मिलेगा ग्राफ. हुआ? This is what IV characteristics. तो इसमें इतना तक है 3 मार्क्स का. इसमें छोटा छोटा 2 क्वेश्चन पूछता है. लिखो व्हाट आर द इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ LEDs. लिखो फॉलोइंग आर द इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ LEDs. Following are the important features of LEDs. Following are the important features of LEDs. Number one, the color of light emitted by an LED. The color of light emitted by the LED depends on its band gap energy. Depends on its band gap energy. अरे येलो कलर होगा या वॉयलेट होगा, क्या होगा? एनर्जी गैप से पता चल रहा है. The color of light emitted by an LED depends on its band gap energy. Number 2, second one, the intensity of light emitted is determined. The intensity of light emitted is determined by the forward current conducted by PN junction. जो तीनों पॉइंट लिखवाया है मैंने, अरे इसी के लिए तीनों पॉइंट लिखवाया ना. द इंटेंसिटी ऑफ लाइट एमिटेड इज डिटरमाइंड बाय द फॉरवर्ड करंट कंडक्टेड बाय द PN junction. The intensity of light emitted is determined by the forward current conducted by the PN junction. Understand this? ये दो फीचर्स है. Now हमारा घर घर में LED यूज किया जाता है. टीवी भी आजकल LED में देख रहे हैं हम लोग. तो LED का एडवांटेज क्या है? कन्वेंशनल मेथड से LED का एडवांटेज क्या है? LED बल्ब क्यों लगा रहे हैं? लिखो, ये भी 2 मार्क्स का गिरता है. लिखो एडवांटेज ऑफ LEDs. एडवांटेज ऑफ LEDs. राइट डाउन. एडवांटेज ऑफ LED. Advantages of LEDs over conventional what? Incandescent lamp. Incandescent मतलब कौन सा है?
इनकैंडेंसेंट लैम्प, मतलब जो गोल गोल वाला हम पहले यूज किए थे पुराने में, इनकैंडेंसेंट लैम्प, अरे गोल गोल लैम्प जो यूज किए थे, बल्ब, दे आर द इनकैंडेंसेंट लैम्प। देखा है गोल गोल, आजकल तो नहीं है वो, है एक फिलामेंट होता है, तुम लोग देखे होंगे ऐसे। वाह, ये इनकैंडेंसेंट लैम्प है। क्या एडवांटेज है लिखो। फर्स्ट एडवांटेज इज, टेक्स्ट बुक में जो जो लिखा गया है उसको लिखोगे। फर्स्ट इज लो ऑपरेशनल वोल्टेज एंड लेस पावर कंजप्शन। एलईडी कम पावर कंजप्ट करता है, कंजप्शन करता है, ऑपरेशन वोल्टेज भी लो, स्विच ऑन करो तो जलता है आराम से। वाह, लिखो लो ऑपरेशनल वोल्टेज एंड लेस पावर कंजप्शन। लो ऑपरेशनल वोल्टेज एंड लेस पावर कंजप्शन। नंबर टू, second, write down. Second is what? Fast action and no warm up time required. This is the first action. Fast action and no warm up time required. नो वार्म अप टाइम रिक्वायर्ड, मतलब बार लाइट जब लगाते हैं तो पहले वो वार्म होता है, उसके बाद ग्लो करता है। अंडरस्टैंड दिस और नॉट? तो एलईडी में वैसे कुछ नहीं है। फास्ट एक्शन एंड नो वार्म अप टाइम रिक्वायर्ड, नो वार्म अप टाइम रिक्वायर्ड। नेक्स्ट, थर्ड, द बैंडविड्थ ऑफ एमिटेड लाइट इज, द बैंडविड्थ मतलब फ्रीक्वेंसी का या फिर वेवलेंथ का रेंज, वेवलेंथ का रेंज या फ्रीक्वेंसी को बैंडविड्थ बोलते हैं। राइट डाउन, द बैंडविड्थ ऑफ एमिटेड लाइट इज 100 एंगस्ट्रम यूनिट टू व्हाट 500 एंगस्ट्रम यूनिट। ये ऐड करोगे 100 टू 500 एंगस्ट्रम यूनिट। नेक्स्ट, नंबर 4, LEDs are having long life, they are having long life, इसलिए गारंटी दे देते हैं 3 साल 4 साल 5 साल, ऐसे खराब ही नहीं होता है। गारंटी दे या ना दे, खराब नहीं होता है एलईडी। नेक्स्ट, फर्स्ट ऑन ऑफ स्विच, फर्स्ट ऑन ऑफ स्विच, क्विकली ऑन हो रहा है क्विकली ऑफ होगा। फर्स्ट ऑन ऑफ स्विचिंग कैपेबिलिटीज, फर्स्ट ऑन ऑफ स्विचिंग कैपेबिलिटीज। अंडरस्टैंड दिस? नेक्स्ट, यूजेस ऑफ एलईडी, राइट डाउन वेयर दे आर यूज्ड। यूजेस ऑफ एलईडी बहुत सारे यूज है। अरे आजकल जो भी देखो सब एलईडी में लिखो। नंबर 1, यूज इन बर्गलर अलार्म, फर्स्ट यूज इन बर्गलर अलार्म। अरे बर्गलर अलार्म अलार्म देखे हो ना, कोई अगर दरवाजे पे आ गया तो अपने आप अलार्म बजेगा, बर्गलर अलार्म। नंबर 2, ऑप्टिकल कम्युनिकेशन, ऑप्टिकल कम्युनिकेशन स्कैनिंग में जो यूज हो रहा है वो भी एलईडी से। राइट डाउन, द इमेज स्कैनिंग सर्किट्स ऑफ फॉर पिक्चर फोन्स, the image scanning circuits for picture phones. Next, they're used as indicator lamps, they're used as indicator lamps। हैंड कैलकुलेटर भी यूज किया गया। अरे हैंड कैलकुलेटर में जो डिस्प्ले सेक्शन में, अरे डिस्प्ले सेक्शन में ऐसे दिखाता है ना, ये सब एलईडीज है। अरे ये सब एलईडीज है, इसमें सारे के सारे नंबर मिल रहा है, ये सब एलईडीज है, ये सब एलईडी है, हुआ कि नहीं? डिस्प्ले सेक्शन में जितना सब लगाया गया ऑल आर एलईडीज। तो हैंड कैलकुलेटर्स, जितना भी डिजिटल क्लॉक, ये सब एलईडीज है, हुआ। हैंड कैलकुलेटर्स, डिजिटल क्लॉक एटसेट्रा। अंडरस्टैंड दिस? दिस व्हाट अबाउट एलईडी। एनी क्वेश्चंस? एनी क्वेश्चन फ्रॉम दिस? कुछ पूछना है? नहीं है? नेक्स्ट राइट डाउन, सोलर सेल, लास्ट वन लिखो। सोलर सेल, सोलर सेल ये भी एक इंपॉर्टेंट है। थर्ड वन, ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, एंड दिस इज द सेल विच इज नॉट बायस्ड, टोटली बायस नहीं हो रहा है। अंडरस्टैंड दिस? टोटली इट इज नॉट बायस्ड। तो एक कंस्ट्रक्शन कैसा है देखो, बुक में 2 डायग्राम है, 2 का 2 ड्रॉ करना है एग्जाम में। टेक्स्ट बुक का 2 डायग्राम है, वो 2 का 2 ड्रॉ करना है। देखो तो दिस इज व्हाट, ये वाफर्स है, वाफर सब ऐसे रखा जाता है, वाफर्स, सिलिकॉन वाफर्स, केक लाइक स्ट्रक्चर। ये पी है, ये पी है, उसके नीचे एन होता है, इसके नीचे एन होता है, वह इसके नीचे पी एन है। यस, ये पी है, एन है, एंड यू सी दिस। तो इसमें
ये केक सब है, पी एंड एन क्रिस्टल्स, पी एंड एन क्रिस्टल्स का केक है ये सब। तो दिस इज व्हाट, पी एंड एन, ये वाफर्स होता है पी एंड एन का, देखो पी एंड एन का वाफर्स है ये सब। एक मिनट, तो ये डिवीजन किया गया है, बुक का अच्छा डायग्राम दिया है, यू कैन ड्रॉ दैट। तो दिस इज व्हाट एन, ऊपर वाला जो है एन है, ऊपर वाला ये वाला एन क्रिस्टल है, नीचे वाला पी क्रिस्टल है, नीचे पी क्रिस्टल है। हुआ। तो एन में क्या किया गया, फिंगर रॉड्स, फिंगर मेटेलिक फिंगर्स दिया गया है, इसमें मेटेलिक फिंगर्स है, ये मेटल है, दिस इज व्हाट मेटल, एंड मेटल फिंगर सब दिया गया है, मेटल फिंगर सब ऐसे, these are the metal fingers, understand this, metal fingers, is it clear, these are the metal fingers, clear, and नीचे front back contact है, back contact also what, metal है, इसमें जो back contact है वो भी metal से, ये back contact है, ये बैक कॉन्टैक्ट भी, इसमें भी मेटल सब है, फ्रंट कॉन्टैक्ट एंड बैक कॉन्टैक्ट, दिस इज व्हाट बैक कॉन्टैक्ट, ये बैक कॉन्टैक्ट है इसमें, दिस इज व्हाट बैक कॉन्टैक्ट, ड्रॉ करो डायग्राम, दिस इज द एग्जैक्ट व्हाट, एग्जैक्ट डायग्राम ऑफ व्हाट, सोलर सेल, बट सिंपल डायग्राम मैं ड्रॉ करके दिखाता हूँ, उसको लिखो, दिस इज व्हाट फ्रंट कॉन्टैक्ट, दिस इज एन एंड पी, दिस इज व्हाट फ्रंट कॉन्टैक्ट, this is what front contact, this is what front contact, and this yellow portion is back contact, this is what back contact। तो लाइट कहाँ गिरेगा, एन एंड पी में गिरेगा, अंडरस्टैंड दिस और नॉट, मेटेलिक इलेक्ट्रोड में लाइट गिर सकता है ऊपर, व्हेन लाइट ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी फॉल्स, इसमें भी सुटेबल फ्रीक्वेंसी मतलब क्या है, सुटेबल फ्रीक्वेंसी मतलब क्या है, एनर्जी इज ऑलवेज ग्रेटर देन इजी, यहीं पे गिर रहा है फिंगर्स में, मेटल फिंगर्स में, लिखो व्हेन लाइट ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी एच न्यू, एच न्यू यहीं पे गिर रहा है, ड्रॉ करो, या टेक्स्ट बुक का ड्रॉ कर लोगे बाद में, अरे बाद में टेक्स्ट बुक को देख के ड्रॉ कर लोगे, पहले समझो, हुआ, पेज छोड़ दो थोड़ा। So what is the construction? You see, construction is what? It consists of N and P silicon wafers, layer by layer they are taken. What? Towards N side, metallic fingers are there. Metallic fingers are taken. This is known as front contact. And towards P, back contact is there. Back contact is there. This is what the construction. Now working is what? When light H nu is greater than what? Eg, when false. H nu greater than Eg false. It generates what? Three things happen. Three things happen. One is your generation, second is separation, and third is collection. When light of H nu greater than Eg falls there on the solar cell, three things happens. First is the generation, first point is generation, अच्छे से समझो, उसके बाद मैं डिक्टेट करूंगा, जनरेशन, नंबर टू इज द सेपरेशन, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स अकर्स, सेपरेशन सेपरेशन, एंड थर्ड इज व्हाट, थर्ड इज कलेक्शन, ये तीनों हो रहा है इसमें, तीनों हो रहा है, कैसे देखो, जब एच न्यू फॉल करेगा, इसका दूसरा डायग्राम ये है, दूसरा डायग्राम ऐसे ड्रॉ करो, दूसरा डायग्राम थोड़ा इजी डायग्राम है, ये दूसरा डायग्राम है, दूसरा डायग्राम है, तो दिस इज व्हाट depletion layer, light of suitable frequency falls here, h nu is greater than Eg, clear, and this is the only diode which is not biased, ये biased नहीं है, ये totally not biased, clear, this is what the load resistance, कोई external EMF connect नहीं किया गया, bias मतलब, understand this is what P and this is what N, clear। So when light of suitable frequency falls at the junction, same, it breaks covalent bond and breaks huge number of covalent bond, so it generates electron and hole pairs. When light of suitable frequency falls here, it breaks covalent bond and it generates electron and hole pairs. Understand this? Now separation occurs. Separation क्यों होगा? Due to the electric field of the depletion region. Depletion region का एक electric field है, क्योंकि N में पॉजिटिव है, P में नेगेटिव है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड जा रहा है. Due to the what? Due to the
electric field at the junction of the depletion region, electrons are sweeping towards n side and holes are sweeping towards p side, दोनों में होगा. अंडरस्टैंड, दिस इज नोन एज सेपरेशन. कलेक्शन होगा, द इलेक्ट्रॉन्स आर रीचिंग एन. इलेक्ट्रॉन जब एन को रीच करेगा कहां पे कलेक्ट होगा? इलेक्ट्रॉन जब एन को रीच करेगा, इलेक्ट्रॉन जब एन को रीच करेगा दे आर कलेक्टेड बाय द मेटल. एंड पी में होल जब पी में कलेक्ट होगा दे आर कलेक्टेड बाय द बैक कॉन्टैक्ट. अंडरस्टैंड दिस. दस यहीं पे नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा. कहां पे? अरे यहीं पे नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा. एग्जैक्टली क्योंकि इसमें रीच ऑफ इलेक्ट्रॉन है, नेगेटिव चार्ज है. बैक कांटेक्ट में पॉजिटिव चार्ज हुआ. अंडरस्टैंड दिस. अगर इसको मैं जोड़ दूं तो ये सेल बन गया. अरे एन में तुम्हारा नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, एन में नेगेटिव चार्ज हो जाएगा बिकॉज रीचिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टेक्स प्लेस. एन में नेगेटिव होगा एंड पी में पॉजिटिव होगा. इफ विल कनेक्ट दिस, एक्सटर्नल में करंट फ्लो करेगा लाइक दिस. करंट इज फ्लोइंग तो लोड रेजिस्टेंस में करंट मिलेगा. समझ में है? अरे समझ में है? सोलर सेल. हेलो, किसका डाउट है सोलर सेल? ये टेक्स्ट बुक का डायग्राम बाद में ड्रॉ कर लो. ये टेक्स्ट बुक का डायग्राम है. अंडरस्टैंड दिस. ये टेक्स्ट बुक में डायग्राम ड्रॉ कर पाओगे? अभी देखो ये देखो ये डायग्राम ड्रॉ करो. ये टेक्स्ट बुक का कर पाओगे? जगह छोड़ दो हाफ पेज. अरे हाफ पेज छोड़ दो, टेक्स्ट बुक का डायग्राम ड्रॉ कर पाओगे? वाह. लिखो. नाउ राइट डाउन कंस्ट्रक्शन. लिखो. राइट डाउन कंस्ट्रक्शन फर्स्ट. राइट डाउन कंस्ट्रक्शन. It consists of PN junction. It consists of PN junction made from silicon. It consists of PN junction made from silicon or gallium arsenide. GaAs, gallium arsenide. Write down. A thin layer of N is grown over. A thin layer of N crystal. A thin layer of N crystal is grown over P crystal by diffusion process. A thin layer of N crystal is grown over P crystal by diffusion process. By diffusion process. Write down. A metal finger electrode. This is a metal finger electrode. Metal finger electrode. क्या बोलो? Repeat. A thin layer of, write down, a thin layer of N crystal is grown on one side. Is grown on one side of P crystal. Of P crystal by diffusion process. By diffusion process. By diffusion process. On the top of N crystal or N layer, on top of N layer, N means N type semiconductor. N layer, a metal finger electrode is given. A metal finger electrode is given, which is known as front contact. Which is known as front contact. While the bottom of P layer, bottom of P layer is a metallic back contact. Is a metallic back contact. Is a metallic back contact. Now write down working. Now write down working. Now write down working. What is working? Write down. When a solar cell is illuminated, when a solar cell is illuminated with light photons of energy, with light photons of energy, h nu greater than Eg, h nu greater than Eg, Illuminated.
illuminated with light photons of energy, light photons of energy h nu greater than Eg, following process takes place. Following process takes place. Number one, generation. Following process takes place. Number one, generation. Number two, separation. Number three, collection. Number one, generation. Number two, separation. Number three, collection. Write on first generation. First, write down generation. When h nu greater than Eg falls, when h nu greater than Eg falls near the junction, near the junction, generation of electron hole pairs occur. Near the junction, generation of near the junction, generation of electron hole pairs occur. Near the junction, electron hole pairs occur. Near the junction, electron hole pairs occurs. Generation of electron hole pair occurs near the junction. Generation of electron hole pairs occurs. Number two, separation. Number two, separation. Due to the electric field of the depletion region, due to the electric field of depletion region, separation of electron and holes occurs. Separation of electrons and holes occurs. Separation of electrons and holes occurs. Electrons are swept to n side and holes to p side. Electrons are swept to n side. Electrons are swept to n side and holes to p side. Holes to p side. Third, collection. Write down collection third. Third, collection. Write down what is that collection? Likho. The electrons reaching n side are collected by the front contact. The electrons reaching on n side are collected by the front contact. Front contact. Electrons reaching on n side are collected by front contact, while holes reaching p side are collected by back contact. While holes reaching p side are collected by back contact. और एक पैराग्राफ में लिखो, thus p side becomes positive and n side becomes negative. Thus p side becomes positive and n side becomes negative, giving rise to EMF across the junction. Giving rise to EMF across the junction. Therefore, in output current is obtained.
Therefore, in output, current is obtained. इसका IV कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा? अरे इसका IV कैरेक्टरिस्टिक्स, what is that? IV characteristics. Let's see that IV characteristics will be what? Different here. Same लिखेंगे यहाँ पे what? I in milliampere, I in milliampere, I in microampere, clear? And plus B, this is what? Minus V. ये कैरेक्टरिस्टिक ऐसा है, ऐसा बताया था। IV मतलब ये एक्सपेरिमेंटल फैक्ट्स है, इसलिए बाय ऐड करना पड़ेगा। यहीं पे देखो, यहीं पे करंट जीरो है, वोल्टेज है। करंट जीरो मतलब क्या है? ओपन सर्किट है। अरे करंट जीरो मतलब ओपन सर्किट है, इसलिए इसको बोलोगे VOC, ओपन सर्किट वोल्टेज। इसको क्या बोलोगे? ओपन सर्किट वोल्टेज। ओपन सर्किट वोल्टेज। क्यों ओपन सर्किट हुआ? अरे ओपन सर्किट क्यों हुआ? बिकॉज करंट जीरो है। यहीं पे क्या है? वोल्टेज जीरो है। वोल्टेज जीरो मतलब क्या है? शॉर्ट सर्किट है। अरे जहां पे वोल्टेज जीरो शॉर्ट सर्किट है, तो ये शॉर्ट सर्किट करंट है। ये IOC, शॉर्ट सर्किट करंट। SC, ISC, शॉर्ट सर्किट करंट। ISC इज शॉर्ट सर्किट, शॉर्ट सर्किट, शॉर्ट सर्किट करंट, शॉर्ट सर्किट करंट। ये ओपन सर्किट वोल्टेज, शॉर्ट सर्किट करंट, ये इसका IV कैरेक्टरिस्टिक्स है। वाह, these are what? IV characteristics. Uses of solar cell लिखो। यूजेस खत्म हो गया फिजिक्स क्लास। वाह, एक्स्ट्रा चीज पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास से। थोड़ा मंडे में, नेक्स्ट मंडे में एक्स्ट्रा पढ़ेंगे इसका लॉजिक गेट है सब। ट्रांजिस्टर थोड़ा मैं बताऊंगा जो एंट्रेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। लिखो, लिखो यूजेस ऑफ सोलर सेल। नंबर वन, नंबर वन क्या है? दैट यूज इन रिस्ट वॉच, हैंड कैलकुलेटर एटसेट्रा। Used in wrist watch, hand calculators, etc. Number two, these are these are used to charge storage batteries. They are used to charge storage batteries. Next, spacecraft make use of arrays of solar cells or solar panel. Spacecraft make use of arrays of solar cells or solar panels to provide electrical energy. To provide electrical energy. Understand this? This is all about your physics course. Physics course for COVID. But Monday थोड़ा extra पढ़ेंगे वाह इसके लिए. Understand this?